Hello बच्चों, let's read this question. What is plaster of Paris? How is it prepared? So let us see the key concept is question. इस question का key concept है plaster of Paris. It is plaster of Paris. So let us discuss plaster of Paris क्या होता है. Plaster of Paris and generally जिसे हम POP भी बोलते हैं, and it has the molecular formula CaSO4 dot half H2O and named as calcium sulfate hemihydrate. It is calcium sulfate hemihydrate, and it can also be written as 2CaSO4, that is calcium sulfate dot H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं. Whereas प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडरी मिक्सचर होता है. इट इज a white powder, and whenever it is mixed with water, पहले एक white plastic mass का formation होता है, then it settle down into the solid mass, and वो solid mass जो बनता है that is called the gypsum. When plaster of Paris plaster of Paris is mixed with water, it forms it forms first plastic mass plastic mass which sets into a solid mass, which sets into a solid mass, and जो reaction takes place होता है that is the calcium sulfate dot half H2O. When it is treated with the water, this mole of water, and it leads to the formation of calcium sulfate dot 2H2O, which is named as gypsum, एंड ये एक सॉलिड मास होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, एंड दैट आर, सो वी कैन राइट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी. जो पीओपी है वो चौक फॉर्मेशन में यूज होता है, जो हम ब्लैक बोर्ड एंड ग्रीन बोर्ड पर जनरली हम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड उसके अलावा टॉयज बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए, एंड हॉस्पिटल्स में जब सर्जरी की जाती है, बोन जो फ्रैक्चर हो जाती है, प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं, एंड इवन डेंटिस्ट भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं. सो वी कैन राइट इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग board chalks board chalks, toys, statues, etc. And it is also used in setting broken or fractured bones, setting broken or fractured bone. एंड इसके अलावा भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस होते हैं. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस.
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, व्हाट आर इट्स वेरियस यूजेस. नाउ वी विल सी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ पीओपी विच इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस. जो हमारे पास जिप्सम होता है, दैट इज हीटेड ऑलमोस्ट एट 120 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे हीट करते हैं. एंड आफ्टर दैट उसमें से जो वाटर होता है दैट कम्स आउट एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पीओपी. एंड जो पर्टिकुलर रिएक्शन टेक प्लेस होता है, लेट अस राइट द सेम. कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O एंड जो टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर इज 373 केल्विन. It forms calcium sulfate dot half H2O and along with this जो water molecule हैं वो release हो जाते हैं. This is the gypsum and this is calcium sulfate hemihydrate और plaster of Paris. Plaster of Paris. एंड हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज माइंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पेरिस. So this was the whole explanation for this. Hope the solution was understandable. Thank you.